So meet our today's guest, Mr. Shailendra Singh. He is a yoga therapist and he's been practicing from 20 years Vipassana until today. Am I right? True, that's right. Yes. So you've been practicing from 20 years? Yeah, yeah. My first course was in December 2004 in Sohna, Haryana. So yeah, 19 years. I mean, it will be 20 years in this December 2024. Yeah. So 20 years 19 of years. celebration and 20 years of anniversary of Vipassana for your Yes. personal life, lifelong journey, what you have been. Right. So I Right. am like very curious to know about spirituality and about Vipassana. So let's get let it मतलब हम इसको रॉ रखते हैं जैसा है वैसा. तो आप मुझे ये बताओ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, what is difference between spirituality and being religious? If you can share a perspective. मुझे प्रेजेंटली लगता है कि जिस तरह से अभी द वे भारत इज और इंडिया इज, ये जो गैप है ये कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इफ वी टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन लेट्स से, तो जिस तरह से मूवीज बन रही हैं, गाने बन रहे हैं, इवन यंग पीपल दे आर एबल टू कनेक्ट टू देम, लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट इट, क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है. नॉट ऑलवेज ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोग हैं जो कि दे आर स्टिल विद द ब्लाइंड फेथ. तो मुझे दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि जो बहुत ज्यादा रिचुअल्स के साथ बंधे हुए हैं, जो आउट ऑफ फियर प्रैक्टिस करते हैं रिचुअल्स को, Mm. that will that may fall in religion. This may, some people may not agree with it, but that is my personal opinion. And like you said only, that when you understand things and there's no blind faith, you understand it with your common sense, and then you have some direct experience with what you are doing, some kind of direct experience. So that is Then like it is uh, spirituality. that's spirituality. Okay. Yeah, yeah. But it's in today's world, it's very difficult to discriminate between what is spiritual. So there will be people who call themselves spiritualists, but they can be very fanatic. They can, they can be a part of a cult, and they may be talking or promoting their organization very staunchly, and criticizing other organizations constantly, and they may call themselves spiritualists, but for I will regard them as more of a religionist, you Okay. know. And there'll be people who are very polite and they are talking about their religion, and they're very sweet, they're very nice, they don't have those hatred feelings for others. I will still call them spiritualists. Okay. Hmm? तो अगर समझो किसी को स्पिरिचुअलिटी में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी हो, क्योंकि हमारे इंडिया में Hmm. अलग अलग सब लीडर्स है. समवन इज फॉलोइंग Hmm. ओशो, कोई ओशो के भक्त है, Hmm. कोई सदगुरु के है, कोई सिस्टर शिवानी के है. तो उसमें अगर Hmm. समवन इज न्यू, हाउ डू दे कैन Hmm. स्टार्ट, लाइक उनको कैसे मतलब क्लैरिटी मिले कि वो ये पाथ पे चले या ये मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब व्हाट यू थिंक ऑन दिस? See, मुझे लगता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से बाहर से तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अल्टीमेटली सब यही बोलते हैं कि दिस इज द पाथ. दिस इज द पाथ. एंड इफ यू डोंट, दिस इज द पाथ. एंड इफ यू डोंट, और सबको देख लो सब ठीक है, बट दिस इज द वन which is the shortcut. या. Or maybe not the shortcut, but this is the path. But that is not how I look at it, and I think that this is how we should also not look at it. ओके. मुझे लगता है कि इस समय में इस समय जितना डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज भरे हुए हैं इस समय, so the moment someone says that this is the path, this is like, it's a cult, and people are scared to join cults. राइट. So I feel
it's important to take help. They're giving great advices. Either it's Osho, he's super wise, like you said, he's a very wise person. Not Very normal intelligent. wisdom. Yeah, like Not the normal wisdom. Something extraordinary. Something very extraordinary. extraordinary. Same goes for Sister Shivani. Like her simplicity, the way she speaks, her grace. I mean, she's like an angel, like a living angel. She's Yeah. so pretty, and at the same time, her words and her voice is so sweet. The way she speaks, the vibes. When she speaks and her vibes, I think they're very, very beautiful, very pure. Who else? Sadhguru. I think again, very, very wise person. Lot of following. Who else? Who else do you think? Shiri Shiri. Yeah. So Again, if very I ask, graceful personality. okay, It's so not about following, just mhm, uh, becoming blind. yeah. Following someone blindly. I think it's best to pick up the good things, inculcate in you, and live a good life. That's what I feel. Yeah, it says like, love is blind, वो जो बोलते हैं, don't love Hmm, blind. hmm, मतलब सोचो, समझो, मतलब ये hmm, कि कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, नहीं हो रही है। तो आई hmm, थिंक hmm, इसमें भी यही होगा, स्पिरिचुअल पाथ में भी, कि आप एक्सप्लोर करो, आपको किससे कनेक्ट हो रहा है। hmm, बिकॉज व्हाट hmm, पर्सनली आई फील इज एवरी पार्ट टेक्स यू टू दैट वन डेस्टिनेशन। आपको वो एक चीज समझ में आ गई right. ना कि लाइक दिस इज द वन, Hmm, जैसे मौलाना रूमी कहते हैं, आई चूज लव, यू नो hmm, बस hmm, hmm, उन्होंने वो एक बात लिया। पर अगर आप सब hmm, जगह hmm, अलग मतलब एक्सप्लोर करो, बट वो रास्ता आपको hmm, एक hmm, ही जगह पे लेके जाता है, तो वो right. क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे अभी समझो, आई थिंक जितना मैं आपको जानती हूँ, आप भी कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, राइट? So I सो big time into Vipassana. Yeah. या सो यू डूइंग विपासना? Hmm, hmm. Okay. So does it connect it to any person or the organization, or like how is it? So there, are, I think, many forms of Vipassana, but like this is a very popular form of Vipassana, which I'm sure you have also heard. You live in Gujarat, so I thought you live in Pune. Okay, so Satyanarayan Goenka ji, like he's the person who started Vipassana. He restarted Vipassana, they say, and it was started by Buddha 2500 years ago. But they say that this is not even Buddha didn't discover it. It was reinvented by him. It was already there in Bharat or in India. It was there from long time, and people become Buddha because they follow Vipassana. And it's not. I mean, Buddha is not just one. There have been lot of Buddhas, and there will be lot of Buddhas. So Buddha is the enlightened one, or the enlightened one. So the point we were talking, like Goenka ji says that uh, you talk to someone, you go to a spiritualist or a spiritual mentor or a master, and he or she says something, and that something doesn't even appeal your common sense. Hmm. So it's important that some science is there. I mean, if it's completely, it's completely blind faith, and a normal logic is saying, is not able to accept it, then of course you have to use your mind. You cannot be so blind. And like these spiritualists, I think they do talk very logically, but at the same time, there are many, many, um, maybe you can call them spiritualists. Also, you may call them. That difference between being religious and spiritual has, I think, to some extent, has reduced also. In the present scenario. So I think it's very important to see uh, some common sense is there or not there. That is important. So as a beginner, if somebody wants to start their journey on spiritual, like spiritual journey, we can say, because मेरा मानना Hmm, ये है कि आपके जो बोलते हैं ना, बेस, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, तो दुनिया की कोई hmm, hmm, ताकत आपको हिला नहीं सकती है। और hmm,
हम जब यंग होते हैं तभी हमारी टेस्ट होती है बहुत सारी, मतलब तभी हमें ये सब की राइट। जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब व्हेन वी आर एट द ओल्ड एज एंड एवरीथिंग, वहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इसी इसी एज में ही हम लाइक हमारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत कुछ होता है। तो अगर किसी को स्पिरिचुअल पाथ अपना फाइंड करना हो, अपने गुरु फाइंड करना हो या स्टार्ट करना, तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इतने सारी चीजें हैं यहाँ पे, हमारे इंडिया में बोलो कहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इज लाइक, हमारे यहाँ से ही सब कुछ गया हुआ है बाहर, और वही हमें रीसेल करके, मार्केटिंग वही सब अच्छा सा पैक वैक करके वही हमें बेच रहे हैं। बट हमारे इंडिया, हमारे भारत का ही ये सब कुछ। तो अगर कोई स्टार्टिंग एज ए मीडिएटर एट द वेरी बिगनिंग, बिगनर लेवल, वो कैसे स्टार्ट करें विद द वेरी मुझे बेसिक। लगता है दो मुझे लगता है दो तीन चीजें हैं जो मुझे, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बाहर से जो नॉलेज आ रही है जो कि अभी बहुत पॉपुलर भी है, जैसे विपश्यना में बहुत ज्यादा एम्फेसिस थॉट्स पर नहीं है। ओके। विपश्यना बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग पर नहीं बोलती है अच्छा। कि पॉजिटिव सोचते रहो पूरे समय। तो दे टॉक अ लॉट अबाउट क्लेंजिंग योर सिस्टम। सो हाउ डू पीपल क्लेंस क्योंकि देम? so they have two techniques. One is called anapan, which is natural respiration awareness. नेचुरल So you रेस्पिरेशन। close your eyes, you sit comfortably, you sit erect, you're not slouching, your mind is calm, and you focus your attention completely on the passages of the nostrils, on the inner walls of the nostrils. You're completely focused. Of course, you cannot be completely focused suddenly. Have you have to have lot of patience because breath is something which is very subtle. हम्म। जो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं उसे पकड़ना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर हमें कोई बोले कि अ, हमें 1 घंटे पूरी तरह से एनीथिंग वी हैव टू फोकस कंप्लीटली, तो हमारा माइंड 10 बार इधर उधर जाएगा। तो ब्रेथ तो बहुत ही सार्थक है, उसको देखना। तो प्राणायाम करना फिर भी आसान है, अपनी ब्रेथ को लंबा करके उसको देखना आसान है। कपालभाति करना फिर भी आसान है, भस्त्रिका करना फिर भी आसान है, लेकिन नेचुरल ब्रेथ को देखना मुश्किल काम है। तो उसके लिए यू नीड some kind of place where there will be some discipline, some silence, सब कुछ आपको मिला हो जिससे कि आपका माइंड बहुत ज्यादा फोकस ना हो। खुद से करना थोड़ा मुश्किल काम है घर पे। तो the first practice is anapan, which is observing your respiration, natural respiration. So this helps in developing focus. ओके। अगर माइंड बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा है और आप सोचें कि हमारी माइंड मन साफ हो सकता है, तो वो जो अपने को भ्रमित करने वाली बात है। हमारा माइंड अगर हर तो समय इधर उधर दौड़ रहा है। हाँ। ओके, नहीं हम्म। वापस क्या ना, बहुत अच्छा, क्या बोला आपने? माइंड को अगर So हम। if our mind is constantly running here and there and we are thinking कि हमारा माइंड की बहुत क्लेंजिंग हो रही है किसी टेक्निक से, that's not possible. हमारा माइंड को थोड़ा फोकस होना तो जरूरी है। इट्स लाइक कि एक बच्चा है और उसको हमने एक ब्रेड दी है और कुछ दिया है, साथ में कुछ दूध दिया है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली भागे जा रहा है। एक टुकड़ा खाता है और भागे जा रहा है, इधर भागता है उधर भागता है, थोड़ा टीवी देख रहा है। और लेकिन हमने अपने माइंड में सोच रखा है कि हाँ इसने पूरा खा लिया होगा अच्छे से, हम ऑफिस भी चले गए, हमने ही सोचा हुआ है पूरा खा। दैट्स नॉट पॉसिबल। उसका फोकस्ड होना, पेशेंस आना जरूरी है। तो फर्स्ट टेक्निक इज आनापान टू डेवलप फोकस, एंड observing breath is also connected with cleansing of the mind. On a superficial level, it also helps in cleansing of the mind. The second practice is scanning your energy field, which is similar because you're also into yoga, which is similar to Yoga Nidra, ओके। but cyclic sleep or Yoga Nidra is again, uh, this can be a little controversial if I say, but बस ये आपके जो cyclic दिल sleep is में। still very superficial, very superficial. Lot of visualization is used, and the element of reality can be very less in Yoga Nidra. Sometimes you're focusing on the chakras, but in Vipassana, it's like watching the reality as is, not changing it. ओके।
seeing the things So as they in are, very so being when very you close say to seeing reality. the things as they are, yeah, it means that you're watching the feelings on the body Hmm. as they are. But to do that, your mind should have lot of sensitivity. So like Sadhguru says that being sensitive and being sentimental, they're not same. They're very different. Being sensitive and being Being sentimental. Okay. They're they're not. very different. Being sensitive is very powerful Oh, thing. If you're sensitive, you can feel yourself. You oh, can feel yes. other beings. Yeah. But if you're sentimental, which it means you're emotional. So being emotional and being sensitive, they are not same. Okay, now I get it. Being Yeah, sensitive it's not is same. very powerful. Yeah, it's not Yeah. same. So when you develop your sensitivity towards your breath through watching the internal walls of the nostrils, you start feeling these parts, Hmm. and slowly it helps you to watching your feelings also. Okay. So you've been And there has practicing. been lot of, Okay, go ahead. yeah, yeah, and there has been lot of talk about muscle memory these days. I think so many people are talking about that your body is your subconscious mind. If you have heard this guy, this person, very popular person, Joe, I'm forgetting his name. He says this, that your body is your mind, Your your body. subconscious mind, and many other people are talking about this. People were not talking about this earlier, but in Vipassana they do say that your subconscious mind works with your body. Okay. So your Yeah, but brain it is is true, right? connected with your conscious mind. Subconscious. So exactly like right now, I definitely. if we are like Hmm, talking, or if I'm writing, I'm eating, or like जो भी कर रहे हैं हम वो एक naturally, because it's a condition of your subconscious mind. From there only we are doing everything, right, right? So it right. is connected, right? True. Yes. Like, yeah, what you are saying is the mind which is programmed already. Yes. Yes. Hmm. True. But that is, I think, still one part of it. Like, Okay. subconscious mind is huge, Yeah, very it's huge. huge. It's like since the time you have taken birth, or maybe in the previous Before lives also, previous life. everything which is stored is subconscious mind. I'm very interested to know about previous life, but we'll talk in the later conversation if we come across. For that, you need some other guest. Okay, yeah. तो like जैसे अभी आपसे बात हो रही है, तो it feels like it's so calming energies, and like very very calming energies. So that's a reflection of you, I think, practicing vipassana every day. Yeah, definitely. सो अगर आपको मतलब वही मेरा था कि बेसिकली अगर किसी को स्टार्ट करना एज अ बिगनर लेवल, तो Uh, विपासना इज द वे। जैसे अभी मेडिटेशन है, ठीक है, जैसे मेडिटेशन में हमारे अलग अलग चीजें, जैसे हम कैंडल मेडिटेशन करते हैं टू काम योर माइंड, त्राटक बोलते हैं, टू काम योर माइंड डाउन, और उससे बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट्स होते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ता है, साइकिक पावर बढ़ता है आपका, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि विपासना ऐसा है ना कि लोग को ऐसा होता है कि बस वो वहां पे चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, वो सबकी अपनी अपना एक होगा। बट बहुत बिगनर लेवल पे किसको, क्योंकि देखो आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ, ये सब बहुत सारे लॉज है, मतलब बहुत सारे ज्यादा ही लॉज है। तो फिर इंसान कौन सा right. लॉ फॉलो करे? मतलब True. कि एज अ, मतलब वही घूम के क्वेश्चन आ रहा है कि एज अ बिगनर, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी रिलीजन सबका अलग अलग है, ठीक है, एंड समवन इज लाइक दे बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। उन वो सोचते हैं कि क्योंकि धर्म तो इंसानों ने बनाया है, और एक वो सबको एक ही रास्ते पे ले जा रहा है, कोई भी धर्म हो, इससे, बिकॉज वी हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन। बट अगर किसी को स्टार्ट करना हो छोटी छोटी चीज से भी, तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जिससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ ये ज्यादा लाइक पावरफुल हो, मतलब उनकी स्पिरिचुअलिटी जो ग्राउंड है, जो मैं बोल रही हूँ ना, जो बेसिक है, जो हमारा उसको जो पावरफुल करना है, कि अगर लाइफ कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, दे कैन फेस इट,
मतलब वहां पे डिप्रेशन, हम्म, मतलब वर्ड आना ही नहीं चाहिए, कि डिप्रेशन क्या होता है पता ही नहीं होना चाहिए। हम्म। ये चीज मैं बोल रही हूँ कि, मैं और वो सब मैं छोटी आई चीज से ही जस्ट हमारा होगा। छोटी छोटी चीज से प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन, हैबिट्स, बिल्डिंग दैट हैबिट्स। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम? तो ऐसा होना कि लाइफ में डिप्रेशन या एंजाइटी ना आए। डिप्रेशन एंड एंजाइटी ऑफ कोर्स दिस साउंड की उनकी डिग्रीज बहुत ज्यादा है, बट लाइफ में सफरिंग ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। कि सफरिंग है, एंड पीपल विल लाइक, एक होता है ना कि आई हाँ, एम दिस, मतलब ये होता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड, और दे कैन से आई एम जस्ट गोइंग यस, थ्रू। इट्स वेरी डिफरेंट माइंडसेट, एंड पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट, वो यही कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, आई एम दिस, आई एम दैट, बट एक्चुअली यू आर नॉट दैट, यू आर वे राइट राइट, बियॉन्ड यू दैट। नॉट दैट ट्रू। वही तो। I will, Good. I want to finish the last, answer. Of course, it became quite long, and it's so easy to, forget that what was the original question. So, I said that I do see there's a lot of difference between the Western spirituality and the Indian spirituality. Of course, there can be a lot of debate Is around this there a topic, Western and but Indian? Because spirituality is coming from Indian. There is there is nothing as Western that's what I'm saying. No, spirituality. there is huge, lot of difference. Like There's, when I said that lot of positive thinking is not. If you see, um, even hmm, Sadhguru, he will not say. Even Shri Shri, he will not say that. Oh, I love myself. I love myself. Even they will say, don't say this. I okay, have heard many videos. They will say this. Don't say this. That self love is a new thing, new spiritual concept coming from West. okay. So same is with Vipassana. Vipassana is saying know yourself. I mean, I was coming from Anapan, Vipassana, and the last part is Maitri. And Maitri is about positive thinking, but that's a very small part. Why it is small? Because there's a lot of cleansing, and because of the cleansing, there's already a lot of gratefulness inside. You're not pushing it into your system. It's coming very naturally because of the cleansing. So what I'm trying to say is uh, different people, different spiritualists, and the different organizations, they're talking in a different, like Brahma Kumaris is completely about positive thinking. For them, it Yeah, is the thought, which is everything, yeah. but You are not in the reprogramming your case of subconscious Vipassana. mind every day. That is about, I think मैंने Right, वो समझा है. right, हाँ. Okay. right, true. So this is a difference. I feel that even I will not even say Western and even in Indian there are people who are like Brahmakumaris, which is relatively new organization. I think in comparison to Vipassana, I will say. I cannot say about Sadhguru and Osho is also. I think he was not that old. He was so in comparison to Vipassana because Vipassana is by Buddha. So I think important is what appeals you. That is very important. And like in money, people say that you have to take risk Mm-hmm. and you have to be decisive. These two things are extremely important, either in money making or to grow in life. If you cannot take risk to, go to maybe Brahma Kumari, to Mm-hmm. go to their center, which is very close to your home, and maybe just listen to what they're saying in their Murli or in their 5 day introductory program or 1 week introductory program, or if you're very scared to go to Sadhguru's, that risk taking or going to Vipassana for 10 days, that is very, very important. Okay. Because Important is what is appealing you initially. That is yeah, very important. it's what is appealing. बट यहाँ पे ये होता है ना, कुछ लोगों को सब कुछ अपील होता है, सब अच्छा लगता है, ये भी करे, ये भी Right, करे, ये भी right. करे। और वहां पे होता है कि अब किसको फॉलो करना है, वही हो जाता है। क्योंकि और जब आप विपासना की जो बात कर रहे हो, क्योंकि आप Uh, कंप्लीटली उसी को ही अलाइन कर रहे हो, मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ अब तक, right. कि आप विपासना से ज्यादा Uh, कनेक्ट होते हो, क्योंकि विपासना जो बताता uh, है इट्स अबाउट कि नथिंगनेस, मतलब सब कुछ खाली करना है, मतलब हमें भले पॉजिटिव नहीं चीज खाली हो। करने के बाद यू विल सी कि अंदर बहुत कुछ जो एग्जैक्टली, पॉजिटिव है वो ऑलरेडी है, वो हमें ऑलरेडी है। जबरदस्ती पुश नहीं यस करनी। वी, हाँ, मतलब वो जो बात है ना, जो बोले कि द यूनिवर्स इज इनसाइड अस, दैट डिवाइन पावर, दैट हाँ, डिवाइन, जो भी हाँ, वो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसको पहचानना है।
और उसी के लिए ही हम ट्रू। ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब। और विपासना में मतलब अब यही करना, मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे हमको सब जो जितना इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं ना सब जगह से, उसको खाली करना है। और आपके अंदर का जो रियल जो पावर है, जो आपके मतलब डिवाइन जो चीज है, जो यूनिवर्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो आपके अंदर ही उसी को ही पहचानना है। ट्रू। मतलब सही समझा And मैंने? same thing is like yoga is also yes, true. So there's ओके। word called neti neti. There's a sutra. So neti neti also means this is not me, this is not me, this is not आई एम me. नॉट माई बॉडी, आई तो एम नॉट माई अपने को माइंड। निकालते जाना है बाहर से, हाँ. ओके। And not this way that I'm not the body, I'm not the, I'm not the mind, not this way. Again, with the moment you make a mantra out of something, ओके। then it is just a mantra, it's a belief. It's a belief. ओके। So even again, I will not say that do vipassana. I mean, I do, like when I listen to Sadhguru and Shirishi when they say that, don't say that I love you. That has really helped me a lot. When I say that I really respect myself, I love myself, it has helped me a lot. I had lot of fears. I still have lot of them, and it does help me a lot. So what I'm trying to say is that try. Sometimes you have to try. You may not have lot of faith in it, and if it helps you, do it. I'm not saying they're wrong. And again, like you said that I'm big time into Vipassana, I am, but I am big time into other people also. I do listen to them. So I don't think there's a quick fix thing. We have to really understand what they're trying to say. अभी जो सिनेरियो है ना अफसाना वो बहुत बदल गया है. I think he last so there was a time when सदगुरु को बहुत सुना जा रहा था. I think I will say 2 साल पहले. हम्म। बट अभी लास्ट की 1 1.5 साल में suddenly there are coaches, there are mentors who are suddenly very popular. एंड कुछ समय पहले गुरुडम फॉलो किया जाता था कि अगर सिस्टर शिवानी है, अगर सदगुरु है, या इवन संदीप माहेश्वरी है, ओशो, of course he's not, the body is not there, but lot of following of Osho. And maybe if you know Yogoda, like biography of a yogi, autobiography of a yogi, uh, उनको बहुत माना. But now even people like you and me, if they have something to say, like let's say I will give you example of Priyanka Chopra. She's a या। big star, या। but she, whatever she speaks, her content is so good, and there's a lot of following for her. So Mitesh Khatri sir and so many other people, Joe Vitale, and so this is a new culture that people. It was there. I'm not saying it was not there at all, but now suddenly, if you see Instagram, I think like every 20th person is like the law of manifestation coach. या। It's a new thing. It was not there earlier. और होगा भी तो भी शायद इतनी अवेयरनेस नहीं स्प्रेड हुई थी, अब ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होने लग गई है और उस पर बात हो रही है। ये भी हम कह सकते हैं मतलब। मुझे लगता है कि there's lot of suffering. uh, मुझे दो चीजें जो बहुत स्ट्रांगली लगती हैं, एक तो टू मच कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अगर आप प्लस. कंटेंट भी देख रहे हो, अगर आप कंटेंट भी देख रहे हो, जैसे ही हम कहते हैं ना कि कॉन्शियस, बीइंग कॉन्शियस, आप चूज करो कि आपको क्या देखना है। ये हमारे पास पावर, हमारे राइट. पास ट्रू. हर चीज का पावर है एक्चुअली ह्यूमन के पास। बट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज इट। तो उसी पे तो हम बात करें कि मतलब वो जब विपासना आप बोल रहे हो, तभी तो आपको पता चलेगा आप क्या हो, जब आप खाली हो गए ट्रू. विद द इंफॉर्मेशन ट्रू. स्पेशली, मतलब तब आपको रियल चीज पता चलेगी, व्हाट यू आर मतलब, एंड व्हाट यू कैन डू आल्सो। बट ये है कि ट्रू. जो कंटेंट हम देखते हैं, अगर समझो कोई चूज करे कि विपासना पे हमें देखना है या विपासना पे सुनना है, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में, तो वो उसके हिसाब से उसका माइंड फीड होगा फिर। ये तो हम चूज कर ही ट्रू. सकते हैं कि कंटेंट क्या देखना है, क्योंकि हर जो कोई कंटेंट बना रहा है उसके हिसाब से वो अपना कर्म भी बना रहा है, लिख रहा है मतलब। अगर शायद ये आज कोई सुन रहा होगा हमारी बात, उसको कुछ भी अच्छा समझ आया, कुछ भी अच्छा भी फील हुआ, तो भी हमारे मतलब एक अच्छा कर्म हमने किया है मतलब। तो आप कंटेंट क्या बनाते हो वो भी बहुत मैटर करता है। अब कुछ लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए बना रहे हैं, वो भी ठीक है उनकी जगह पे। बट अगर आप कॉन्शियसली कंटेंट बना रहे हो, आप देख रहे हो, वो बहुत फर्क पड़ता है उससे आपके माइंड पे।
true, अगर right. विपासना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा क्यूरियोसिटी थी मुझे, इसलिए मैंने आपसे कनेक्ट किया कि विपासना के बारे में जानना है कि करना मतलब करना चाहिए, कैसे होता है और एक्चुअली क्या होता है। अभी जब तक आई डोंट गो थ्रू इट, मेरे को नहीं वो पता चलेगा, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू इट, यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कर रहे हो और आपको पता है वो क्या चीज है, तब जाके आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो, आप बता पा रहे हो कि एक्चुअली विपास मतलब क्या चीज है ऐसा। ये सब जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो और उससे थोड़ा अलग है मतलब वहां पे, True, क्योंकि true. प्रैक्टिस कंटिन्यू, मतलब जैसे अगर समझो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ले लो, वहां पे भी हम कोई ना कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं ना, कि ये करना Right, है जाके right. आपको ये चीज मिलेगी, ये मिलेगा ऐसा। बट अगर Right, हमें right. हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ बैलेंस करना हो, तो उसको कैसे बैलेंस करें, Hmm. उसको कैसे बैलेंस करें, क्योंकि रहना तो हमें ये लाइफ मटेरियल लाइफ में रहना ही है ना हमें, Hmm. तो उसको Hmm. कैसे बैलेंस करें नहीं वो। तो आप अगर चाहे विपश्यना की भी बात करें, वो भी ये नहीं बोलता है। वो सिर्फ ये बोलता है कि इनफैक्ट जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो गृहस्थी आते हैं उधर, but it asks you to devote 1 hour in the morning, 1 hour in the night. Some discipline is important to do this cleansing, and in the end do medicine. I mean, send good vibes to other beings, all the beings in the universe, ओके। and do your best in life. I mean, whatever you're doing, जो भी आप काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को अच्छा समय दो। बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि हमारा अभी डिजायर्स बहुत ज्यादा, जितना कंटेंट होगा उस तरह की उतनी डिजायर्स होंगी, उतनी ज्यादा डिजायर्स बढ़ेंगी। एंड मतलब पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच, इतना बड़ा चेंज आया है। एंड साइकोलॉजिकली पीपल आर, जो हवा में जो वाइब्स हैं वो लो हैं, बहुत बहुत फियर है, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, डर बहुत हम्म। ज्यादा है। तो चीजें बहुत बदली हैं। एंड जैसे मैं आई वाज सेइंग, वी आर वेरी इंडल्ज इन कंटेंट एंड फूड, दीज टू थिंग्स। जितना ज्यादा अपने शरीर और मन को हम भरते जाएंगे, हमारी क्लैरिटी बहुत कम होती जाएगी। हम किसी को भी फॉलो करने लगेंगे, कहीं से भी कहीं भी भागने लगेंगे। हम्म। तो खाना और मेंटल फूड, आई थिंक दीज टू थिंग्स बिल्कुल। आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या। और वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब स्विगी जोमेटो, हम कभी भी खाना मंगा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। एंड द कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड हैज रियली इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ा है। यू राइट। सो मतलब इसमें क्योंकि जो हमने वही बात की कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो मटेरियल वर्ल्ड में आप अच्छा खेल पाओगे, मतलब स्ट्रांगली, यू वोंट बी बिल्कुल, बोथ द वर्ल्ड, बोथ द बोथ द वर्ल्ड। वर्ल्ड। बिकॉज मेरा ये मानना है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन आपका स्पिरिट, जो भी आप ये प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअलिटी हो गया या आप जो भी राइट, रिलीजन से आप राइट। जुड़े हुए हो, कोई हम्म। आपको जब चैलेंजेस आती है ना, तो कोई तो आप किसके सामने तो झुकोगे ना आप, मतलब उसके सामने ट्रू। झुकोगे तब आगे दुनिया में मतलब कम झुकना पड़ेगा, कम तकलीफों से जाओगे, मतलब क्योंकि देर इज समथिंग यू कैन, वहां पे देर इज नो जजमेंट मतलब। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए भी हम जो आप कह रहे हो, ये प्रैक्टिस इसीलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप माइंड से भी अच्छे से डिसीजंस ले पाओ, क्लैरिटी, ये बहुत सारी चीजें, इमोशनली आप स्ट्रांग हो सकते हो। ट्रू, ट्रू, सो वेरी इट ट्रू। वाज लाइक आई मीन मुझे। यस, ऑफ कोर्स हम क्योंकि विपश्यना के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, हाँ। but like you and me, we both listen to Mitesh Khatri sir, या। and we do listen to other beings also. We listen to Imran Beg sir, and they're amazing people. And I या mean, I'm not saying that only to Vipassana. That may be seen, that may be seen like this, that I'm saying that do, but because we discussed it a lot, or I spoke about it a lot. या बिकॉज यू आर But प्रैक्टिसिंग I, एक्चुअली दैट थिंग, सो मतलब आप जिससे right. जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसी के बारे में, क्योंकि हर चीज ऑब्वियसली वो भी एक दे आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, सो एवरी Hmm. प्रैक्टिस इज ट्रांसफॉर्मिंग सम लाइव्स, मतलब हर किसी की True. लाइफ। बट ये बस आप किससे कनेक्ट हो पा रहे हो, और अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते जा रहे हैं पॉजिटिव, वो सब कुछ जो वो खाली करना ही पड़ेगा, मतलब अगर आपको एक्चुअली उस पाथ मतलब दैट वन डिवाइन पावर, डिवाइन उसको जानना है तो मतलब, बिकॉज वो हाँ, कहते हैं ना, इन नथिंगनेस इज एवरीथिंग। in nothingness there is everything. Yes. If you can explain that little more. इट्स अ वेरी Hmm. it has to be experienced, like
मतलब आप देखो कि जब लोग परेशान होते हैं और हर चीज मतलब, तो हम्म, लोग ये लाइफ को एस्केप करना चाहते हैं जो नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। और हम जाते हम्म, हैं पहाड़ों में, जाते हैं इधर, जाते हैं टू फाइंड द पीस। बट राइट वी राइट। फॉरगेट, लाइक वी आर द पीस, वी आर द लव। हम्म, like say like you fall in love or something, या you are in love, falling तो छोड़ दो, falling वाला वर्ड तो मेरा दिमाग, बिकॉज अगर आप फॉल हो रहे हो तो वो लव है ही नहीं। you always हाँ, rise हाँ, in love if हम्म, that's a हम्म, love, actual love. हम्म, हम्म, वहां पे यही मतलब जो हम कहते हैं नथिंगनेस देयर इज एवरीथिंग, मतलब तो जितना आप हम्म, मतलब जितना खाली होते जाओगे क्योंकि हर मेडिटेशन प्रैक्टिस है ना, हर जैसे आपने विपासना बोला, हेल्पिंग, हर या राइट। एवरी मेडिटेशन प्रैक्टिस, बिकॉज हमारे दिमाग में जो थॉट्स है वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चलते जा रहे हैं मतलब, और उसको ही शांत करने के लिए हर चीज कर रहे हैं हम मतलब, ट्रू। अपनी अंदर की रूह की आवाज सुन पाए मतलब। और हम्म, बोलते हम्म, गूगल हैज ऑल द आंसर, आई से हम्म, लाइक योर सोल हैज ऑल द आंसर्स। एक बार शांत होके देखो, आपको अपने आप सब जवाब मिलेगा, बट उसके लिए यू हैव टू Google has all the answers. YouTube has गूगल, all the गूगल answers. You could मतलब be हाँ, neighbor, even they will have all the answers. या सो इवन गूगल, यूट्यूब, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, तो उनको हमने ही तो इंफॉर्मेशन स्टोर की है एज ए ह्यूमन, वी हैव फेड देम, लाइक हमने डाला है उसके अंदर कि ये अगर डालेंगे तो ये जवाब मिलेगा। बट वो हम जो बात कर रहे हैं, टू नो आवर सेल्फ, लाइक वी एज वाई वी आर बोर्न एज ए ह्यूमन, इट्स अ वेरी बिग प्रिविलेज। आपने बहुत अच्छे कर्म किए तब जाके आपको ह्यूमन फॉर्म मिला है मतलब। तो लाइक गूगल हो, ये हो सब, उसमें कितना मतलब गूगल डजंट हैज ऑल द आंसर्स, और यूट्यूब और एआई मतलब, इट्स वी ह्यूमन हैज फेड। मतलब अगर आज कल इन इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आगे बढ़ जाएगा मतलब, फिर भी पर जो इमोशंस है ना, वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है, ह्यूमन इमोशंस, कभी भी नहीं। तो बिकॉज टू नो योर सेल्फ, वो आपको ही करना पड़ेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी उसको कितना भी फिट, वो नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। पीपल हैव टू Very true. सेल्फ, या लाइक वो आपके टूल्स आपको मिल जाएंगे कि आप ये करो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, ये रास्ता है, ये रास्ता है, बट करना तो आपको ही है। अभी तो इतने सारे मतलब नई नई चीजें मालूम पड़ती है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई मशीन है वो लगाओ, आप ऐसे ही पतले हो जाओगे, या फिर ऐसे ही मतलब, पता नहीं अभी वो कितना सच है, मैंने सिर्फ सुना है मतलब ऐसा, बट मुझे नहीं मालूम कितना सच है, क्या है ऐसा। बट जो भी आपने बताया विपासना के बारे में, इट वाज लाइक रियली गुड, मतलब मुझे और जानने मिला मतलब, क्योंकि आई एम क्यूरियस टू नो कि विपासना करना चाहिए। मतलब मैं खुद से कितने टाइम से जान, मतलब वो बोलते हैं दिमाग में आप सोचते हो वही आपको फिर दिखने लगता है, वैसे लोग भी मिलते हो। तो आई केम अक्रॉस यू, तो मुझे कब से मेरे है वो ऑलरेडी लिस्ट में कि मुझे विपासना करना है मतलब, बिकॉज बहुत लोग उसके बारे में, It's बहुत कम amazing. लोग हैं, वैसे बहुत मुझे नहीं कम लोग लगता हैं, है। बट बहुत ज्यादा लोग इस पे बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये चीज को, विपासना को। I mean, like you tried, and my other students also and other people also, they were trying and they said कि सब जगह full है, सब जगह full है. There's so much stress, so many issues, and not just Vipassana, people are going everywhere. सारे spiritual देखो, retreats शायद आजकल भरे पड़े हैं, इतना ज़्यादा. You go to a psychiatrist एंड उसकी क्लिनिक पूरी भरी होगी, मतलब बाहर तक लोग बैठे होंगे. तो हाल बहुत बुरा है. द गुड थिंग अबाउट विपश्यना इज कि वो क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं देना चाहता. एग्जैक्टली, और वो इंस्टेंट द नहीं है, द इंस्टेंट टीचर नहीं विल है। ऑल्सो नॉट आंसर, द टीचर विल नॉट या आंसर, जो या टीचर वहां बैठे हैं दे विल नॉट आंसर. दे विल इंसिस्ट टू कीप ऑन डूइंग योर प्रैक्टिस एंड यू विल गेट द आंसर. तो वो इससे बहुत मुझे इंपॉर्टेंट, वो यही, इंडिपेंडेंस बढ़ाता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो अभी जो इंस्टेंट वाला चल रहा है ना हर चीज, इसीलिए पीपल आर सफरिंग, बिकॉज सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। अभी अगर आप राइट. साइकेट्रिक की बात करो, कोई भी बात करो, अगर जैसे मेडिसिन ले रहे, कुछ भी ले रहे, वो आपका सुपरफिशियल पे ही काम कर रहा है, आपके जो ट्रू. रूट्स पे जाके कोई काम ही नहीं हो रहे ना, आपको हील होना पड़ेगा, आपको यू हैव टू गो थ्रू यू हैव टू गो थ्रू द मेस एंड एवरीथिंग मतलब, वही चीज तब जाके। तो विपासना इसीलिए मतलब लोग इतना नहीं भी करते, और इतना इम्पोर्टेंस भी है उसका, जिसको पता चल जाता है, ट्रू. देन दे स्टिक टू इट। फिर यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, दे नो इट कि मुझे हाँ. यही करना है बस।
क्योंकि वो ट्रू, इंस्टेंट नहीं है, आपको टाइम लगेगा, बट वो इंस्टेंट और परमानेंट रहेगा आपके साथ। ट्रू। और बाकी सब तो इस इंस्टेंट। जमाने में जब हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं या कि हम 20 मिनट में हम आई थिंक 100 रील्स देख सकते हैं पता नहीं या कैसे देख बहुत सकते कुछ हैं यार। हम कॉन्स्टेंटली स्वाइप कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं मैंने मेरे मेरे उस उसमें समय अभी में। सब नोटिफिकेशंस ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, मैं अपनी मर्जी से देखती हूँ। मतलब यू आई आर हैव एनलाइटेंड पावर कंट्रोल। आई डोंट, मतलब ऐसा मेरा है ही नहीं वो। मतलब करते हो, मैं वो देखती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ ना, तो आई नो देखते रहते हैं। मैं बोली कितना ओवरलोड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, एंड फिर बोलते हो कि हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप खुद से ही क्रिएट कर रहे हो। राइट, बट इवन देन दे आर अनअवेयर ना, इवन देन दे आर नॉट श्योर कि वो किस वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली, दे आर नॉट अवेयर, दैट्स ना अवेयरनेस, वो चीज है ही नहीं मतलब। when you're trying, you are like, you're not that actually. राइट, Always राइट, remember that. Yeah. या, So yeah, we'll connect again very soon. sure. Thank you so much, Afsana. So nice meeting you. And yeah, it felt so easy to talk to you. It was quite natural, organic conversation. So thank you so Yeah, much. I just want to keep everything like, authentic, organic. Whoever comes, Right. any guest here, like, like Hmm. just be yourself. That's it. मतलब True. True. आप अगर गाड़ी में रख के बात करना चाहते हो, गाड़ी में बात करिए। मतलब Hmm. लाइक प्रॉपर, ऐसे नहीं कोई बोलेगा मेरे को तो बेड से बात मतलब कोई कैसे, Right. मतलब वैसे तो होगा भी नहीं No, बिकॉज not sitting on the commode. I want everything natural. मुझे सब natural चाहिए. Right. Hmm. all right, thank you so much. Thank you. We'll Thank you, connect Afsana. soon. Yeah, Sure, thank you. sure. Good night. Take care. Good Take night. care.